अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू सर न्यूटन्स क्लासरूम। आज मैं आपको क्लास 1 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आज हम आपकी किताब का चैप्टर नंबर 11 जिसका उन्वान टाइम एंड डेज ऑफ द वीक यानी कि वक्त और हफ्तों के दिनों के दिन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम अपनी इस क्लास में टाइम और डेज ऑफ वीक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम अपने टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। टाइम यानी वक्त। बच्चों, मैं आपको अब यहाँ पर टाइम यानी कि वक्त के बारे में बताऊंगा। वक्त को कैसे देखते हैं, मतलब घड़ी से हम कैसे वक्त को देख सकते हैं और देखकर कैसे टाइम बता सकते हैं। और घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, एक बड़ी, एक छोटी और एक सेकंड वाली होती है जो कंटिन्यूसली चलती है। मैं आपको इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। चले बच्चों, अब हम एनिमेटेड वीडियो से भी टाइम यानी कि वक्त के बारे में पढ़ते हैं। Telling time to the hour and half hour. What time is it? What time is it? It's 8 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 3:30. It's 3:30. What time is it? It's 5:30. It's 5:30. What time is it? It's 12 o'clock. What time is it? It's 10:30. It's 10:30. What time is it? It's 6 o'clock. What time is it? It's 12:30. It's 12:30. What time is it? It's 11:30. It's 11:30. What time is it? It's 9 o'clock. What time is it? It's 11 o'clock. What time is it? It's 9:30. It's 9:30.
What time is it? It's 7:30. It's 7:30. What time is it? It's 1:00. और बच्चों, अब हम आपकी किताब में से भी टाइम के बारे में पढ़ेंगे। वक्त, यहाँ पर घड़ी बनी हुई है। इसमें छोटी सुई को घंटे की सुई कहेंगे और बड़ी सुई को मिनट्स की सुई कहेंगे। इसमें दो सुइयां नजर आ रही हैं। बच्चों, एक छोटी है जिसको घंटे की सुई कहेंगे और दूसरी बड़ी है जिसको हम मिनट्स की सुई भी कहते हैं। और यहाँ पर 4 घड़ियां बनी हुई हैं जिसमें टाइम यानी कि वक्त के बारे में बताया हुआ है। जिसमें पहली घड़ी में 12 बजे हुए हैं, दूसरी घड़ी में 9 बजे हुए हैं, तीसरी घड़ी में 6 बजे हुए हैं और चौथी घड़ी में 3 बजे हुए हैं। और अब बच्चों, नीचे दी गई घड़ियों को वक्त से मिलाएं। जैसा कि पहली घड़ी को 10 बजे वाली घड़ी का टाइम 10 बजे से मिला हुआ है, अब हम बाकी घड़ियों को खुद मिलाएंगे। दूसरी घड़ी का टाइम 2 बजे है, इसको हम 2 बजे वाली घड़ी से मिलाएंगे। तीसरी घड़ी में टाइम 5 बजे है, इसको हम 5 बजे से मिलाएंगे। और अब आखिरी घड़ी में टाइम 8 बजे हुए हैं, इसको हम 8 बजे से ही मिलाएंगे। बच्चों, अब हम घड़ी को देखकर सही वक्त लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर 8 घड़ियां हैं और सब घड़ियों का टाइम सबसे मुख्तलिफ है। चले आए उनका टाइम यानी कि घड़ियों का वक्त लिखते हैं। इस घड़ी में 1 बज गया है और इस घड़ी में 7 बजे हैं और इस घड़ी में 3 बजे हैं और इस वाली घड़ी में 5 बजे हैं। इस घड़ी में 9 बजे हैं और इस घड़ी में 8 बजे हैं। इस घड़ी में 6 बजे हैं और बच्चों, सबसे आखिरी घड़ी में 10 बजे हैं। बच्चों, आपको टाइम यानी कि वक्त के बारे में अच्छे से समझ आ गई है ना? बच्चों, अब हम हफ्तों के दिन के बारे में पढ़ेंगे। चले बच्चों, अब हम एनिमेटेड वीडियो से भी हफ्तों के दिन के बारे में पढ़ेंगे। Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Days of the week. How many days are there in one week? 7. There are 7 days in a week. Can you name them? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
What are the weekdays? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. What days are the weekend? Saturday and Sunday. What day is it today? What day was it yesterday? What day will it be tomorrow? हफ्ते के दिन। दिनों के नाम पढ़ें। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार। बच्चों, उम्मीद है कि आपको वक्त और हफ्ते के दिनों के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। इन कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।